Starting with case 1, when debentures are issued at par and they are also redeemable at par, right? So whatsoever is the face value of debenture, that would be collected from debenture holders, and later at the time of redemption, that only would be paid. How much? Face value, right? In that case, guys, the journal entries that we pass is bank account debit to X% debentures, debenture application and allotment account with face value. And the second entry, X% debenture application and allotment account debit to X% debentures account. Assuming that इसीलिए कहते हैं जल्दी नहीं करनी चाहिए, right? Okay. So 600 into 100, that is 60,000 rupees, was collected by the company, and the same 60,000 the company has transferred to debentures account. This, guys, we have already seen. Where? Under which title? The same two entries we have already seen. बोलिए, under which title we have seen this? Sorry? Ah, right. Issue of debentures in lump sum. There we have seen this. Right? Note down this, guys, now fully. Now, guys, case 2. Vijay, have you noted down? Issue of debentures at par which are redeemable at a premium. Right? So, let's say a company has issued 607% debentures of rupees 100 each.
at par, which are redeemable after 15 years at a premium of 20%. You know that premium amount, whether it is collected at the time of issue, whether it is repaid at the time of redemption, that is calculated on the face value of debentures. It means today company is collecting rupees 100 per debenture, but at the time of redemption, the company will repay rupees 120 per debenture. Correct or not? It means in future the company is going to have loss of rupees 20 per debenture. Yes or no? Since it is future loss, we know it now. It should be recorded now only with the accounting assumption of conservatism or prudence. The accounting assumption of conservatism or prudence says that future losses should be recorded now only if we know about them. Right? So here the first entry would be as it is. Why? Because the company has collected only rupees 100 per debenture for 600 debentures. But in the second entry, we will transfer the 60,000 rupees from debenture application and allotment account to debentures account. That also will remain the same. But the loss that is going to happen in future after 15 years, that would be recorded now. And for that, we will debit loss on issue of debentures account. How much loss on 600 debentures at the rate of rupees 20? That is rupees 12,000. For this loss, we will credit an account that is premium on redemption of debentures account. With this amount of loss, that is rupees 12,000. So this is how our second entry would be. Am I clear? Note down this, guys, all. Now, guys, this loss that we have here is a loss of capital nature, means it's a capital loss. And the Companies Act says that if any such loss occurs, that should be written off from the books in the same year in which it occurs. It means this loss should be written off in the same year, and for that we can use credit balance of securities premium account. Am I clear? This we have already studied in issue of shares chapter, section 52 of the Companies Act. Have you understood, guys, or not? The other thing, guys, is premium on redemption of debentures account and securities premium account. They both are different accounts. They are not same. Though they both are about premium, but it's not same, guys. Securities premium is a reserve of capital nature, whereas premium on redemption of debentures account is a long-term liability of a business, non-current liability, which is shown in balance sheet under long-term borrowings because it is part of borrowings, which is to be repaid after 15 years along with rupees 60,000. Am I clear or not, guys? So I'm writing this here. You also start copying it.
Note down this, guys, all, and then we will see. This was example 2, guys. One second. This was example 8. This is example 9. This is example 10. And now case 3 and example 11. But first, you note down this, everyone. So, guys, if we do not have adequate balance in securities premium account or there is no balance at all, then we can debit P&L account and credit loss on issue of debentures account. ये discount लिखा है मैंने. This is loss, guys. I'm really sorry. This is loss, not discount. Loss on issue of debentures account. Done, guys, all. Manya, Sir, you have noted down this, right, Manya? sir, So, what is the amount that the company has collected on every debenture at the time of issue? Sarthak, Mishika, Drishti, calculate and tell me what is the amount per debenture company has collected at the time of issue? Per debenture, I'm asking, not total amount. For every debenture, how much company has collected? Drishti, Mishika, Sarthak.
क्या हो गया सार्थक? हर एक डिबेंचर से कितना पैसा मिला है कंपनी को इशू के टाइम पे? कितने का डिबेंचर है एक? 600 तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं। फेस वैल्यू कितनी है एक डिबेंचर की? ये 600 जो ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 607% डिबेंचर्स, जिसमें हर एक डिबेंचर 100 रुपए का है, वो कंपनी ने इशू किया है। फेस वैल्यू कितनी है दृष्टि डिबेंचर की? अभी इधर आ जाओ, इधर वाली बेंच पे। 100। और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम? 10% डिस्काउंट किसका, इसका हम कैलकुलेट करेंगे 10% ऑफ वॉट? 600 क्या है? हम्म क्या है 600? क्या है डिबेंचर? क्या है मतलब? ये 600 क्या है? 600 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं। 607% डिबेंचर्स मतलब 7% जो डिबेंचर्स हैं वो नंबर्स में 600 हैं, उसको कंपनी ने इशू किया है। और हर एक डिबेंचर 100 रुपए का है। तो कितने का डिबेंचर? एक डिबेंचर कितने का है? अभी तो बोला मैंने, हर एक डिबेंचर कितने का है। कितने का हर एक डिबेंचर मिशिका? एवरी डिबेंचर इज ऑफ हाउ मच? बोलो बोलो फटाफट बोलो, पता है आपको? डो नॉट फियर। हाँ। सार्थक हर एक डिबेंचर कितने का है यहाँ पे? 100 का है, और हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? तो 10% किसका कैलकुलेट करेंगे? हाँ, तो कितना आता है? 10। इसका मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10, 100 रुपए के डिबेंचर पे। तो हर एक डिबेंचर का कितना पैसा मिलेगा हमें? 100 का डिबेंचर है, मैं आपको 100 का डिबेंचर इशू कर रहा हूँ दृष्टि। उसमें 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आपसे कितना ले रहा हूँ मैं पैसे? हाँ, 90, राइट। बहुत मुश्किल है, आप लोग बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, यू आर इन वेरी बैड स्टेट, वेरी वेरी बैड स्टेट, आई टेल यू। सो हर एक डिबेंचर के 90 रुपीज मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। तो 600 डिबेंचर्स के कितने मिलेंगे? 600 into 90, दैट इज 54,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे? एक्स% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट उतने से ही डेबिट करेंगे जितने से हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है, मतलब 54,000 रुपीज से। 600 into 90। हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट पे हम इशू कर रहे हैं, और डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट दिया हर एक डिबेंचर पे हमने सार्थक? 10 का। तो 600 डिबेंचर पे कितना हो गया? 6,000। ये डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट हो गया। डिबेंचर्स अकाउंट को हमेशा हम फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करते हैं। फेस वैल्यू कितनी है हर एक डिबेंचर की? 100। तो इसलिए डिबेंचर्स अकाउंट जो है वो 60,000 रुपीज से ही क्रेडिट होगा। क्लियर? का फ्यूचर में कोई लॉस हो रहा है क्या यहाँ पे? क्योंकि हम डिबेंचर्स को कैसे कैसे रिडीम कर रहे हैं? एट पार। तो फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है हमें? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं आएगा। तो हमारी एंट्री होगी X% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। मैं X% लिख रहा हूँ, वैसे सब्जेक्ट 7% रहेगा।
आप चाहो तो X% से ही कंटिन्यू करो, क्योंकि यहाँ पे 7% लिखा है, इसलिए 7% रहेगा। 7% नाम होता है डिबेंचर का, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स, राइट। लिखिएगा ये जो दो एंट्रीज। sir, Now case 4, guys. We have total 6 cases here, 6 different combinations. Example 12. Issue of debentures at a discount which are redeemable at a premium. Discount at 10% which are redeemable after 15 years at rupees 105 per debenture. इसका मतलब guys ये हुआ that today we are collecting rupees 90, but after 15 years we would be repaying rupees 105 per debenture. आज हम 10 रुपए कम ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में 5 रुपए हम ज्यादा देने वाले हैं। लेकिन ये 10 और 5 अलग अलग चीजें हैं। 10 रुपए जो हम आज दे रहे हैं वो है डिस्काउंट, और 5 रुपए जो हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं बाद में वो है प्रीमियम। प्रीमियम। एम आई क्लियर? सो आज हमें यहाँ पे 90 रुपीज कलेक्ट हुआ है, इसलिए फॉर 600 डिबेंचर्स वी विल हैव द सेम एंट्री हियर। Then debenture application allotment account would be debited with 54,000 with which it was created in the first entry. Now, since we have given discount, discount account would also be debited with the amount of discount. But in future we are going to have loss. That loss we will record now. So we will debit loss on issue of debentures account. कितना लॉस होने वाला है हमें फ्यूचर में हर एक डिबेंचर का? हाँ, 5। प्रीमियम की बात करते हैं हम सर, फ्यूचर के लॉस में, फ्यूचर में तो 5 रुपये ही होने वाला है, राइट। मतलब 3000, और यही 3000 हमें फ्यूचर में देना है 60,000 के अलावा। डिबेंचर्स का पैसा हमें देना है 60,000, और 5 रुपये और देना है। वो 5 रुपये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, उसको हम क्रिएट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। Am I clear, guys, or not? So this is discount, this is future loss, and against that future loss we have to pay 3,000 rupees more than 60,000. Note down this all. Now guys, case 5, example 13. Issue of debentures at a premium which are redeemable at par. So this we have already seen, guys, in normal cases also. Right here, issue is at a premium, but redemption is at par. So 600 7% debentures rupees 100 each were issued for rupees 120 per debenture, which are redeemable after 15 years at par. क्या करेंगे अभी हम यहाँ पे एंट्रीज? पहली एंट्री क्या होगी? किस एंट्री में? फर्स्ट वाली एंट्री में कभी भी प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं आता, चाहे इशू ऑफ शेयर्स का केस हो चाहे इशू ऑफ डिबेंचर्स का केस हो, कभी भी नहीं आता। यहाँ पे हम नेट अमाउंट एंट्री करते हैं, क्योंकि प्रीमियम या डिस्काउंट अलॉटमेंट के बाद आता है, और अलॉटमेंट इस फर्स्ट एंट्री के बाद होता है, तो सिर्फ रिसीव रिसिप्ट की एंट्री है। यहाँ सिर्फ हमें पैसा रिसीव हुआ है।
कितना पैसा रिसीव हुआ हमें 600 डिबेंचर्स का? 120 रुपीज, मतलब 72,000 रुपीज। इस 72,000 में मतलब इस 120 में 20 का प्रीमियम भी है। पर प्रीमियम हम फर्स्ट एंट्री में कभी भी शो नहीं करते, क्योंकि अभी तो सिर्फ पैसा आया है। हम जब डिबेंचर्स या शेयर्स अलॉट कर देंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा जो हमने अलॉट किया उसमें से इन लोगों का इतना फेस वैल्यू का तो इतना प्रीमियम का। तो कब करते हैं? अलॉटमेंट के बाद। अलॉटमेंट की एंट्री कब होती है, मतलब अलॉटमेंट प्रोसेस कब होता है? फर्स्ट एंट्री के बाद और सेकंड के पहले। इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में बताया मैंने आप लोगों को। अब यहाँ पे जाके हम जो भी हमको 120 रुपीज मिला है उसको हम सेग्रीगेट करेंगे बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रीमियम। तो यहाँ पे आ जाएगा 72,600 इंटू 120। डिस्काउंट है नहीं यहाँ पे, तो डिस्काउंट नहीं आएगा। लॉस भी नहीं हो रहा फ्यूचर में, क्योंकि हम फ्यूचर में पार पे रिडम्पशन करने वाले, इसलिए फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है। 2x% डिबेंचर्स अकाउंट एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। X% डिबेंचर्स में जाएगा 60,000 फेस वैल्यू जो है, और यहाँ पे जाएगा 12,000, दैट इज फॉर 600 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 20। दैट्स इट। ठीक है guys? ना तो लॉस है यहाँ पे, ना डिस्काउंट, ना प्रीमियम, ना रिडम्पशन। नाउ गाइस, लास्ट केस, केस 6। Issue of debentures at a premium which are redeemable at a premium. Example 14. Manya, re-login once the meeting gets over, right? And start noting down Okay, this sir. much only. Note down guys, this much only, and no journal entry. Per debenture it is. Here guys, this entry will remain same. Why? Because in this case also debentures are being issued at rupees 120 per debenture. Done guys, all noted down this much. Sarthak, Manya, have you noted down this? Sir, So guys, how much loss we are going to have in future? Today we are collecting 120, but after 15 years we will repay only rupees 110. आज हम ले रहे हैं इन्वेस्टर से 120 रुपए, लेकिन हम फ्यूचर में कितने देंगे, कितना वापस? 110। तो हमें फ्यूचर में लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट? लेकिन लॉस हमेशा हम फेस वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं गाइस, इशू प्राइस से नहीं। तो अगर आप इसको इशू प्राइस से कंपेयर करेंगे, सॉरी फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे लॉस हो रहा है 10 रुपए का।
फेस वैल्यू कितनी है 100, और हम फ्यूचर में कितना रीपे करने वाले हैं 110, so यहाँ पे लॉस है 10 रुपए का. Am I clear or not? And this is how we will do the recording. So X% debentures allotment account will be debited with 72,000. Loss on issue of debentures account would be debited with loss of rupees 10 per debenture, that is with rupees 6,000. Debentures account would be created with 60, and securities premium account would be created with 12,000, and premium on issue of debentures, sorry, premium on redemption of debentures would be created with 6,000. Got this? Then all. Well, I hope you all understand that this 72,000 rupees we have segregated into two, that is debentures and premium, securities premium. And this loss is for this premium which we have to pay in future. It means this entire journal entry we can split into two. One would be X% debenture allotment account debit, 2X% debentures account, 2 securities premium account. And another entry would be loss on issue of debentures account debit, 2 premium on redemption of debentures account. Am I clear? How do we calculate loss on issue of debentures? By comparing the redemption value with the face value, and not with their issue price. ये भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको. अगर हम इशू प्राइस से कंपेयर करेंगे रिडेम्पशन वैल्यू, तो हमें लॉस नहीं हो रहा है, हमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हर एक डिबेंचर पे, क्योंकि हमने डिबेंचर्स इशू किए 120 में, पर हम रिडीम करने वाले हैं 110 में. 120 कलेक्ट किए, देंगे सिर्फ 110, तो 10 का तो हमें फायदा है. लेकिन हम प्रॉफिट या लॉस इशू प्राइस से कंपेयर नहीं करते, मतलब इशू प्राइस को बेस बना के कैलकुलेट नहीं करते, हम फेस वैल्यू को बेस बना के कैलकुलेट करते हैं. राइट?
Note down this also, guys. Manveer, note it down. You're noting down everything, right? लिखिए गाइस ये टाइटल। This entry is guys pass at the end of the accounting year in which loss on issue debentures account comes into picture. जिस साल में भी ये अकाउंट आपके बुक्स में आया उसी साल आपको एंट्री पास करनी है उस साल के एंड में। और एंट्री क्या है? सिविल स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट। इसके साथ या अगर सिविल स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल को डेबिट करके लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट को आप क्रिएट कर दीजिए। ये समझ में आया? अगर आपका टोटल लॉस लुक एट ये अगर आपका टोटल लॉस 12,000 रुपए का है और सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 4,000 रुपए पड़े हैं तो आप 4,000 रुपए से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करोगे बाकी 8,000 रुपए से स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट को डेबिट करोगे। इज इट क्लियर? इसलिए मैंने एंड या फिर और लिखा है। लिख लिया आप तीनों ने? दैट्स इट फॉर यू थ्री।